with you all fine people, and there were many more dignitaries and special guests. We would like to thank them, and we'd like you to, go for a recap what we actually had yesterday. After everyone arrived, we opened the session. It was an afternoon session with a theme presentation, and especially would like to thank Mr. Ravi Manocha, Mr. Mohit Gautam, Mr. Eric Rustamji, Mr. Ashutosh Vol, and Mr. Amit Kumar. Followed by a break, and of course the tour visit to the exhibition. After the break, before the evening session, we had our interactive session followed by the meet and greet to our Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India. Mr. G.Kishan.Reddy was, of course, a constant support, and he was felicitated by the President, Mr. Amritman ITTA, Convention Chairman, Mr. K.S. Sahane, and, of course, by Mr. Raktim Das, the Chief Growth Officer, TV9 Network. Followed by the addresses to our eminent speakers and dignitaries, of course, about how to grow in this business as a big family. It was a wonderful address delivered by our Honorable Minister of Tourism and Culture, Mr. Reddy, and of course, what are the new plans and the programs offering by the Government of India. Of course, bringing to add new avenues and growth to this particular tourism business. Then, with the Executive Editor Kartikeya Sharma from TV9 Network, we had a one-on-one conversation with our Honorable Minister, Mr. Reddy. And of course, once the entire session was over, there was a vote of thanks, and there was cultural dance performance. Now, ladies and gentlemen, just check out our AV recap. Once again, we'd like to thank our Honorable Minister of Tourism and Culture, Shri G.Kishan.Reddy, for his constant support and motivation. Tourism is a fraternity which adds a lot of revenue to our nation's GDP. So once again, greeting and thanking all the professionals, business owners of this industry. Now, ladies and gentlemen, we are going to be having the opening remarks by the Vice President Sarat Chandra from ITTA, and I would request him to be on the stage and deliver the opening remarks. Thank you. Distinguished guests, my dear ITTA members, ladies and gentlemen, a very pleasant good morning to all of you. Thank you very much, Mr. Chandra. It was indeed a pleasure having all the insights from you. We'll be starting with the first panel discussion. Ladies and gentlemen, as mentioned by Mr. Chandra, it is the road ahead challenges and opportunities. I would be inviting the members of the panels, and I would request everyone to seat one by one from my right side. I would now like to invite on stage Mrs. Subhash Goyalji, Chairman, STIC Travels Group. Can we have a big round of applause for him, please? The President, ITTA, Mr. Amritman.
Mr. Bhim Singh Ji, he is, of course, the modern king from the royal family of Rajasthan. Can we have a big round of applause, please? Mr. A. Afzal, Managing Director, Praveen Travels Private Limited. And now I would like to request Mr. Praveen Sahni, Galaxy Toyota. The moderator of the entire session, I would now like to invite Mr. Amit Bhatt, ICCT Head, to moderate the first panel discussion. So, thanks a lot. Good morning, everyone. Mr. Bhatt, it was absolutely an amazing panel discussion, and that was the first panel discussion comes to an end. But before we continue with the second panel discussion, we have the felicitation program. And to do the honors, सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ Mr. Praveen Sahni ji from Galaxy Toyota. And to do the honor, I would request Mr. Paramjit Singh Gujral to be on the stage and felicitate. All right, ladies and gentlemen, now we will continue with the second panel discussion. We are not having the tea break, and I'm sure, like, the refreshment has already been served here inside the hall itself. So we would like to continue with the second panel discussion, which is called the Tech Making Road Safe Travel Sustainable. खूबसूरत सी पल का एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. I believe, thank you very much. I believe this is the fraternity where we meet every single day new people. We, make it happen for the business, for our family, and of course we make their experience absolutely comfortable and worth remembering. Ladies and gentlemen, we'll be starting with the second panel discussion. Meanwhile, I would request everyone to please take your seats so that uninterrupted we can start the next panel discussion. Sir, we're starting right. So once again, ladies and gentlemen, we are not going to be having any tea breaks, and I would request everyone to please take your seats so that we can start our next panel discussion. All right, ladies and gentlemen, I'm sure it was a brilliant start of the day, and the refreshment is already here. So enjoy your tea and coffee and, of course, the refreshment. Meanwhile, we'll be starting our second panel discussion shortly. Enjoy your day. All right, ladies and gentlemen, I would once again request everyone to please take your seats. Now we are moving forward to our second panel discussion of the day. It is called the Take Making Road Safe Travel Sustainable. And the participants of the panel discussion, I would like to invite on stage to the dais Mr. Prasanna Patwardhan Boki. I would now like to request to come and take the seat in the dais Mr. Anil Chikara, Deputy Commissioner South, STA Delhi. Now inviting on stage to the dais Mr. Subhashish Chaudhary, ex-Joint Commissioner Delhi Police, now the CEO Security Delhi Metro. Would now like to invite on stage Avnish Gupta, Business Manager, Force Motors. I would now like to invite our convention chairman, Mr. K.A. Sahani, to take the seat on the dais.
Now I would like to request Mr. Mohit Gautam from BMW. Please take your seat on the dais. And now I would like to invite the moderator of this second panel discussion, is Mr. G.Kishan.Reddy, the Executive Editor, TV9 Network, for the moderation. Thanks a lot to all the participants, and thank you very much, Mr. Sharma, for a wonderful session moderation. Let me tell you, the one-to-one can continue, of course, during the lunch, and let's continue with the third panel discussion that we are going to be starting. It is called the Gen Next Drive Fresh Energy into Sector. Ladies and gentlemen, I would now like to request the participants to be taking their seats on the dais. Ratanjot Singh, Bakshi Transport Services Private Limited. Mr. Jaspreet Singh, JSS Tour and Travels. Mr. Harmeet Singh, Delhi Airport Service Private Limited. Mr. Vistrit Bhatia, Vivek Travels Private Limited. I would request all four of the gentlemen to please take their seats. TV9 और ITTA की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, साधुवाद। Thank you very much. It is really our honor to have along with us Shri Daya Shankar Singh, the Transport Minister, Government of Uttar Pradesh, and thank you very much, sir, for your encouraging words and constant support. And thanking a lot Mr. G.Kishan.Reddy, Executive Editor, TV9 Network. Ladies and gentlemen, now experience an AV. कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और इस दिल से अगर कुछ निकले तो जी हाँ, देश के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं. ग्रीन इनिशिएटिव, बिल्डिंग द ग्रीन नेशन विथ 30,000 प्लान्स. क्या है ये? कैसे हम दिल्ली को और ग्रीन बनाएंगे? ये इनिशिएटिव लिया हुआ है बाय नन अदर देन मिस्टर जैल सिंह. So let's check out. And the lady that you'll be experiencing out here, she is from Lucknow, and it's not about only Delhi. जब दिल्ली कोई इनिशिएटिव लेती है तो it's with the other state also as well. So let's check out the initiative taken by none other than Mr. Jail Singh. Let's check out the audiovisual. Thank you. नमस्कार, मैं सपना साय लखनऊ से आई हूँ और मैं यहाँ से जा रही थी तो आप जो है सरदार जी हमें मिल गए. बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं. उन्होंने मुझसे 1 मिनट मांगा, बल्कि इस काम के लिए हम आपको आधा घंटा 1 घंटा भी मांगते तो दे देते हो. मैं 5 पेड़ लगा देती, बट आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने देश के लिए और पर्यावरण के लिए सोचा और मैं उनके लिए, उन्होंने मुझे 1 पेड़ दिया है और मैं यहीं पे पास में ही कनॉट प्लेस के गार्डन करते जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है. और आई होप कि जब मैं 4-5 साल बाद हूँ ये पेड़ बहुत बड़ा मिले. थैंक यू सो मच. That was awesome. तू अपना खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना. अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना. अगर सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना. तू अपने अंदर चिंगारी की आग भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना. तू कुछ अलग कर, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना. On that note, ladies and gentlemen, हमारी ज़िंदगी is a struggle, is a hardship. Every single day हम सोचते हैं कुछ, होता है कुछ
और हमारे आसपास के लोग, आपको पता ही है, सपोर्ट से ज़्यादा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑल द लीडर्स प्रेजेंट हियर दिस इवनिंग, मुझे पता है कि कोई भी पीछे आपको खींच ले, आप रोकने वालियों में से नहीं हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर सेइंग दैट दिस अमेजिंग ITTA convention is a very, very successful one with all you fine people. Right now, an inspirational talk by none other than the Para-Olympic athlete, and he is a true winner in his life, none other than Mr. Devendra Jajaria. I would request him to come and present something in front of you, and I'm sure it will be very, very inspirational and motivational for all of you. Thank you. Mr. Devendra Jajaria. कोई किसी से क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, बाकी थैंक यू। थैंक यू देवेंद्र जी, आप प्लीज बैठिए। कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। A winner will always know what is his focus and will be consistent. And it says, it is the courage that you have to continue. And that is how you one day become the winner. We're really very privileged to have this amazing inspirational talk from Mr. Devendra Jajaria. And to felicitate him, I would like to invite on stage the President, ITTA, Mr. Amrit Man, and of course the convention chairman, none other than Bobby G, Mr. K. Sahani. Thank you very much, Mr. Jajaria. All right, ladies and gentlemen. कहते हैं हम हमारे ज़िंदगी जो होती है उसकी जो गाड़ी है उसके खुद के ड्राइवर्स होते हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी चला के आगे लेके जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ड्राइविंग is a very core profession. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और फैमिली चलती है ड्राइविंग से, लेकिन हमारे यहाँ पर ड्राइवर्स के ना कोई टाइमिंग होता है और ना ही शायद वो अप्रिसिएशन। कहीं भी हम दफ्तर में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं ना, हम पूछते हैं सर व्हाट इज़ द टाइमिंग, 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटे, 9 घंटे। लेकिन फॉर ड्राइवर्स आई हैव सीन व्हेन आई ट्रैवल स्पेशली दिल्ली चंडीगढ़, इट्स लाइक 24 hours they're driving, then maybe बीच में 8 घंटा सो रहे, फिर 24 hours they're traveling। काम ही ऐसा है, बट हमें कहीं अप्रिशिएट करने का मौका ही नहीं मिलता। हम भी अपने ख्याल में आ जाते हैं, उनके साथ चल पड़ते हैं और एक जगह से चढ़ के दूसरे जगह पर उतर जाते हैं। कभी शायद हमने पूछा भी नहीं, आपने खाना खाया, आप ठीक हो, नए कपड़े डाल लिया आपने, उस दिन दिवाली पे क्या किया, बच्चों के लिए मिठाई ली। बट बहुत सारे जन जो ऐसे हैं जो अपने जो फैमिली के साथ अपने ड्राइवर्स जुड़े हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको बहुत ही मोटिवेशन भी देते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ ड्राइवर्स के साथ आज हम आपके मुलाकात करवाएंगे। दे हैव बिन कॉन्स्टेंटली ऑन देयर टोज एंड ड्राइविंग सेफली। मतलब ड्राइविंग का क्या मतलब है, मैं चंडीगढ़ सुबह 4 बजे गाड़ी में चढ़ गई और आके गाड़ी के अंदर सो गई। मुझे पता है कि ये बंदा जो है मेरी गाड़ी सही सलामत लेके पहुंचा देगा। जी हाँ, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग ऑल्सो, बट स्टिल जितने गाड़ियाँ यहाँ पर ड्राइवर्स चलाते हैं उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। तो चलिए, इज द टाइम फॉर अप्रिशिएटिंग देम एंड टू डू द ऑनर। We are very, very privileged and honored that we have along with us our Honorable Minister Transport from Government of Uttar Pradesh, Mr. Dayashankar Singh Ji. I would request him to please be on the stage, and along with him I would request Shri Rajiv Mehra Ji, the President, ITTA. एक बार जोरों की तालियां हो जाए। इनके कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना शायद हम कहीं नहीं होते। सो थैंक यू वेरी मच सर। और चलिए, जिन्होंने ठान लिया है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह तक एकदम सही सलामत हर दिन पहुंचाएंगे और अश्योर किया है कि आपको सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग व्हील्स में हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी टेंशन, सब कुछ हमारी। And that is what they've been doing for a long, long time.
Inviting on stage from Vivek Travels Private Limited, Shri Mahesh Arya ji, please मंच पे आइए. जोरों की तालियां हो जाए. महेश जी थोड़ा सा हंस दीजिए, थोड़ा सा हंसिए. हाँ जी, चलिए, बहुत सीरियस लग रहे थे. अब काम ही ऐसा हो गया है, थोड़ा सा सीरियस ज्यादा रहना पड़ता है. थैंक यू. एक बार जोरों की तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच. And along with them now I would like to invite on stage Amritman sir and Mr. K.S. Sahani sir. Ladies and gentlemen, a one-man show. How exactly it is done? How exactly he runs the business? Well, we are clueless. But definitely, if you'd like to know, you can have a one-to-one with him. From Delhi Taxi Tourist Transporters Association, ladies and gentlemen, I'll be inviting on stage Mr. Sanjay Samrat for the felicitation. Mr. Sanjay Samrat. और मैं बता दूं, संजय सम्राट जी को मीठा बहुत पसंद है. सर बोलना भी बहुत मीठा बोलते हैं, खाना भी पसंद है, क्योंकि आज लंच के टाइम में ना मेरे पीछे ही लाइन पे लगे हुए थे और रहा नहीं जा रहा था. मतलब प्लेट उठा उठा के पहले ही ले रहे थे. और इंसान भी बहुत ही मीठे हैं, तो एक बार जोरों की तालियां हो जाए संजय सम्राट जी के लिए. तालियों में दिल्ली वालों की तरफ से बहुत ही कंजूसी. नहीं, अब नहीं है. वैसे 5 बजे के बाद मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनती हूँ, तो थोड़ा सा जोरों की तालियां होगा तो बेहतर रहेगी. कांग्रेचुलेशंस सर. यस सर. मैं थैंक्स करना चाहूँगा ईटा का, और मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो 2 साल में फंक्शन कराए हर साल में करें. और एक छोटी सी और बात कहूँगा कि हिंदी में करें, क्योंकि आधी आबादी से भी ज़्यादा 99% के 100% हमारे हिंदी भाषी लोग आते हैं, समझते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश में बोलते तो आधे से ज़्यादा के समझ में नहीं आता. थैंक्स अमृतमान साहब, थैंक्स बॉबी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. संजय जी को मैंने मीठा बोला और मेरे को ही ऊपर से घुमा के गए कि इतना इंग्लिश मत बोलो भाई, है ना सर. आप मीठा खाने के टाइम पे ही बोल देते, सिरिन बहुत ज़्यादा हो रहा था इंग्लिश, हिंदी बोल दिया करो. चलिए, अभी तक पेमेंट नहीं आई है, मैं बता दूं सर, देख लेना. आगे बढ़ते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स ऑल द फाइन जेंटलमैन ऑन द स्टेज. Thank you so much. And now, of course, the vote of thanks would be delivered by none other than the convention chairman, Mr. K.S. Sahani.